All right, gee, hello. Good evening. Welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another session of the Hindu analysis. Today is 5th of May 2026. It's a lovely Tuesday evening and we are live. I hope I'm audible, visible with the PPT to everyone. Just give me a quick yes, a quick affirmation in the chat box so that we may begin today's discussion. I can see Swaroop, I can see Rashi, I can see Pratyush, Charmi. Okay, Aradhya is here, Mahika is here, Siddhi is here, Rudra is here, Keith is here. Alrighty, welcome to the stream, everyone. बढ़िया ठीक है स्टार्ट करें आज की बातचीत. Where are the rest of you? चलो, hoping more people would be joining in the next couple of minutes. Let's look at today's agenda. The three articles which we're going to discuss today are, first one is regarding acid attack survivors. So the court has issued some changes to be made to the Persons with Disabilities Act with respect to acid attack survivors. तो उसकी थोड़ी सी बात करेंगे. Then there's an article on transgender rights with respect to the recent changes which have been made to the law. And then there are some discussions which we'll do with respect to a case, a POXO case, and मैं आपको पूरा background दूंगा उसका. So तीन आप कह सकते हो social legal articles हैं आज हमारे पास to discuss. And goes without saying, as we all expected, today's newspaper is just full of state assembly elections and related articles. I think 60 to 70% of the newspaper is about that. But we'll only do what is relevant for us very briefly, and then we'll probably skip all of those articles and do the ones which are relevant and then come back to our PPT. And then because Menti quiz is due for a while now, and as we discussed, we'll do the Menti quiz today after our discussion finally. आ गए हैं बाकी लोग भी on the stream. Aryan is here, Shripad is here, Ruhi is here, Parth is here, Haru is here. Very good evening guys. So I'm hoping कि और लोग आएंगे आज stream पे क्योंकि हम Menti quiz करने वाले हैं आज finally. April के current affairs is the topic for today's Menti quiz. For people who are new, this is just a quiz, MCQ based quiz which we do usually every Friday. But last Friday, because I was almost about to die, तो हम नहीं कर पाए थे, क्लास भी पूरी नहीं कर पाए थे rather. But yeah, we'll do it this Tuesday. Sora is here, Shri is here. Good evening, guys. Shivraj is also here. Good evening. Very good evening. Top of the evening to everyone who has tuned in. चलो ठीक है, start करते हैं आज का discussion. Let's not do any further ado. Let's go to the newspaper. बाकी आई होप आप सबकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है, फर्स्ट क्लास ऑन टॉप. कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो. मैंने ईमेल्स के रिप्लाई करना फिर से शुरू कर दिया है. एक दो लोगों के बच्चे हैं अभी रिप्लाई करने को, वो भी आज निपट जाएंगे. बट या डू फील फ्री टू राइट टू मी इन केस यू हैव एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन और विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग इन जनरल, एक्सेप्ट आस्किंग मी मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, या मुर्गी पहले आई या अंडा. उसके अलावा कोई सारे डाउट्स मैं एंटरटेन करने को तैयार हूँ. आज का न्यूज़पेपर हमारी स्क्रीन पे विजिबल है सबको. सारण्या इज हियर, गुड इवनिंग. ऑलराइट, ठीक है, चलो. आई होप द न्यूज़पेपर इज नाउ विजिबल टू एवरीवन. लेट्स बिगिन बाय एड्रेसिंग द मेजर, you could say, aspect of today's newspaper, which is the results of the state assembly elections. You can see breaches and bastions, change and churn in Bengal, Tamil Nadu, Kerala. Although we did a brief discussion yesterday, but for people who were not there yesterday and just because we have to today, let's talk about the results. West Bengal में तो खेला हो गया है, and ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस TMC हार गई है बहुत बुरी तरह, और बंगाल जनता पार्टी, और नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है वेस्ट बंगाल में जीत गई है. बेस्ट जनता पार्टी, बीस्ट जनता पार्टी, बेहतरीन जनता पार्टी, whatever you might call it, we know. ठीक है, so they have got a huge victory, almost 2/3 majority in assembly. 206 लगभग सीटें आई हैं इनकी out of 294 available seats, and you could call it anti-incumbency, you could call it Modi ji and
Mota Bhai being Modi ji and Mota Bhai. You could call it SIR related issues. You could call it the RG Kar related anger in people, whatever. The matter of the fact is that Trinamool Congress has dropped sharply to just mere 80 seats. Mamata Banerjee also lost her own seat, Bhabanipur, to a candidate of BJP, Suvendu Adhikari. एंड बीजेपी का वोट शेयर ऑलमोस्ट 45-46% बढ़ गया है एंड कॉन्सिक्वेंटली टीएमसी का वोट शेयर ऑलमोस्ट 40-41% कम हो गया एंड दिस इज अ मेजर मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट इन वेस्ट बंगाल बिकॉज इज द वेरी फर्स्ट टाइम बीजेपी इज मेकिंग अ गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल. Okay, Vishnu is here. Good evening, Aradhya Sai. I believe the Kerala branch of INC is more pro BJP than the National Party. Could be. Good evening, Srishti. Why on earth do we keep electing actors as leaders? Because we as Indians, I don't speak for myself here, although I identify as an Indian. Most Indians, let's put it that way, are still in a colonial hangover where we like to worship people who are famous, people who are in power, एंड सो ऑन. सो है थोड़ा सा वो मेंटालिटी धीरे धीरे बदलेगी. अभी 70 साल ही हुए हैं हमें आज़ाद हुए. गुलामी की मानसिकता से हम लोग आज़ाद नहीं हो पाए हैं. बहुत ज़्यादा हीरो वर्शिप है हमारे देश में. इतनी हीरो वर्शिप किसी कंट्री में नहीं होती है. मतलब इट जस्ट बैफल्स मी, बैम्बूजल्स मी एंड स्लाइटली अर्क्स मी that we worship Bollywood celebrities or just film celebrities in general so much. Politicians, we worship them so much. Bureaucrats, we worship them so much. And that's not good. I don't think it's a very smart thing to do. Okay, I respect genuine sentiments and respect for art and respect for filmography. But थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं हम लोग. But ठीक है, it's a free country. Everyone is free to have their own methods, ways, opinions, expressions, whatever they want. ठीक है, बट यही है, थोड़ा सा हीरो वर्शिप होता है अपने देश में. तो ये तो बात रही वेस्ट बंगाल की. तमिलनाडु की बात करें तो टीवीके, which is a very new party, 2024 में आई थिंक उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी, अर्ली 2024 में. दिस टीवीके stands for तमिलग वेत्री कज़गम. आई एम नॉट अ साउथ इंडियन, सो प्लीज पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन. हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर दूं, बट या दैट इज द पार्टी ऑफ the actor turned politician C. Joseph Vijay Chandrasekhar, I think is what C stands for. Not very sure on that. But yeah, Joseph Vijay, or as people popularly call him, Thalapati, which loosely translates to commander in English, is what my knowledge says. He has made a powerful debut in Tamil Nadu politics and has formed the largest share of seats, bagged the largest share of seats rather, with 107 seats. He missed getting majority by 11 seats. अगर 118 मिल जाती तो majority आ जाती इनके पास, because 234 seats हैं. So 50% plus 1 चाहिए होती है आपको to form a majority. But the important point is that this broke the duopoly of two major parties of Tamil Nadu, which is the DMK and AIA-DMK. DMK is Dravid Munnetra Kazhagam and AIA-DMK is DMK plus All India. Okay, so All India Dravid Munnetra Kazhagam. So these were the two stalwarts in Tamil Nadu who have been defeated, and Stalin, who was the chief minister, also lost his seats. A lot of top DMK leaders lost their seats, and sir 59 seats रह गई हैं इस बार DMK के पास, which makes them the largest opposition. But yeah, this finally takes Tamil Nadu from a two-party system to a three-way contest with a new major player, Vijay, on the forefront. Yes, this is the same Vijay who was famous for the stampede which happened in his rally. Chat में क्या चल रहा है? Charmi saying, I don't get how him being an actor makes him a good leader. It's not just about him being an actor becoming a good leader. It's more of anti-incumbency, to be honest. People were fed up with the DMK government. Reagan Zelensky was a comedian though, but yeah. Recently Nepal में we saw rapper Balian Shah, Sonny Bono, Arnold Schwarzenegger. कल ही I realized, I was reading somewhere that Schwarzenegger translates to black man, and Schwarz is basically black, and the rest is a slur to call blacks. Interesting trivia. इसका कोई लेना देना नहीं है हमारी क्लास से, but yeah. And now Vijay.
Yes, West Bengal my election commission deleted Muslim leaders which supported TMC. Yes, that is what the claims are. Okay, what else? So I was saying astute flaunt of vocab. ऐसा नहीं है. That was unintentional. It was just हो गया flow में. Anushka is saying, so the Times of India is good or not newspaper for CLAT? I would say stick with either Hindu or Indian Express. Those are more relevant for competitive exam aspirants. Times of India is okay-ish, not the best. Mamata Banerjee played a final move saying she won't resign. Yeah, violence तो चल रहा है काफी वेस्ट बंगाल में. अरे अरे अनुष्का भाई आपने तो स्पैम ही कर दिया हमारा चैट बॉक्स. पढ़ लेता हूँ मैं एक बार में पढ़ लेता हूँ टेंशन मत लो. आऊंगा सबके कमेंट्स पे. यस प्लीज डू नॉट स्पैम प्लीज. मर्यादा बनाए रखें हमारे चैट बॉक्स की. ठीक है चलो तो वेस्ट बंगाल की कर ली हमने बात. तमिलनाडु की कर ली हमने बात. थोड़ी सी केरला की बात बता देता हूँ आपको. यूडीएफ विच इज यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट in consonance in alliance with Congress, they have got a clear victory with 102 seats in Kerala, and this marks the rule of leftist party, Left Democratic Front (LDF) जिसको कहते हैं, जिनके पास सिर्फ 35 सीट्स रह गई. 10 साल तक इनका रूल था, and this surprisingly makes left डिवॉइड ऑफ एनी प्रेजेंस इन द कंट्री. सो अब कोई भी जो है हमारे पास लेफ्ट पूरी तरीके से लेफ्टिस्ट पार्टी नहीं बची है इन पावर इन एनी प्लेस इन इंडिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो या यहाँ पे भी वही है एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट की. बहुत टाइम से सरकार थी, लोग परेशान थे, एंड बीजेपी ऑल्दो हैज स्लोली मेड इन रोड्स हियर with winning 3 seats and increasing their vote share slightly, but again very insignificant political presence as of now. बट या केरला पॉलिटिक्स में भी जो है एक मेजर शिफ्ट आ गया है. सो एलडीएफ से अब यूडीएफ प्लस कांग्रेस की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, एंड मोर और लेस द थीम विच यू सी इन ऑल दीज 3 इलेक्शंस इज एंटी इनकम्बेंसी. ऑन द अदर हैंड बीजेपी हैज वन अनदर टर्म इन असम विच वॉज क्वाइट प्रिडिक्टेबल. तो फिर से जो है असम में बीजेपी की सरकार आ गई है, एंड पौंडीचेरी में भी बीजेपी का अलायंस है एक छोटी पार्टी के साथ विच इज AINRC, ऑल इंडिया NR. कांग्रेस का मतलब है नॉट रियली कांग्रेस, नो जस्ट किडिंग. दिस इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ दिस लीडर N रंगस्वामी. तो ऑल इंडिया N रंगस्वामी कांग्रेस AINRC इनका जो है अलायंस है एनडीए के साथ, एंड ये लोग जो है पुडुचेरी में जीत गए हैं 18 seats out of 30, so they got the majority, right? 16 चाहिए थी majority के लिए. So that is pretty much all we need to know with respect to the state assembly elections and the results. इसके अलावा जो भी सारे articles हैं वो यही बात घुमा फिरा के डिटेल में थोड़े से अलग नुआंस से आपको बताएंगे, एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल्स और देंगे. आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो, बट क्लैट के लिए जितना मैंने आपको बताया उतना मोर देन एनफ है. उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. ये कार्टून मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, very detailed and very witty, I would say. I can see corruption as a broken pot, people here, then Mamata Banerjee, the infiltrators written here, then you have stereotype, this BJP guy holding a fish in his hand, not racist at all. Then here you can see the Marxist people being very sad. Congress, of course, piche being very sad. Here you can see election commission. This is Gyanesh Kumar on the left hand side, and Modi ji. I believe this is the portrayal of Modi ji. पता नहीं क्यों इन्होंने botox कर दिया है उनके lips को काफी ज़्यादा, which I don't appreciate at all. But yeah, and you can see SIR on top. And then broken promises and fixed with monetary incentives, which is portrayed through this bag in which I believe is Mr. Amit Shah on his shoulder. So very interesting cartoon, I would say. Cartoon कहना सही होगा इसको? Artistic depiction, let's call it. Cartoon कहना risky हो सकता है. Okay, so yeah, that's pretty much about the state assembly elections. उसके अलावा हमारे लिए कुछ relevant as such है नहीं. ये एडिटोरियल भी pretty much आज स्टेट असेंबली इलेक्शंस की ही बात कर रहा है. हमारे लिए कुछ ज़्यादा खास है नहीं. ये वाला आर्टिकल, एक आर्टिकल चलो देख लेते हैं फिर भी.
क्या बातचीत कर रहा है? Let's see what is he talking about. He's talking about a fourth party system in India where BJP, is seeing a new phase as a dominant force, and it's debatable whether it is because of Modi ji's popularity or because of long-term structural dominance of BJP or because of that kind of the brand of politics they are playing. So this article speculates on how BJP is so strong and getting stronger. Chat में क्या चल रहा है? Pezeshkin was a surgeon before being president. That's अच्छी बात है, बढ़िया है. What is MAGA verse? MAGA तो I think is Make America Great Again, जो ट्रम्प का स्लोगन है, तो उसी से रिलेटेड कुछ होगा. Lip fillers cause Modi ji's slay. Never in my life I thought I would hear that sentence, but okay. Peak detailing. Shristi is saying, sir, you are really funny. Arey, you guys are too kind. I'm not funny. Chalo. Not a chance. Hormuz opens Nacho. Love that. Very, very nice. Okay, so मैं आप लोगों को इस आर्टिकल के बारे में बता रहा था. So this article essentially talks about how BJP has built this strong power system, which has multiple pillars to it. There's of course support from the RSS, which is Rashtriya Swayamsevak Sangh, which closely aligns with the BJP. Then how the party is organized, links with the stalwarts of the business world, Adani ji, Ambani ji, and so on. And of course, the recent increasing influence over state institutions like the ED, like the CBI, and such. So the article argues, not me by the way, the article argues that this system is helping them win elections consistently and this reduce this anti-incumbency impact and gain political dominance in states where they were almost non-existent a few years ago. Of course, this article also argues that they use RSS to mobilize communities and caste groups and build a narrative of identity politics, especially Hindu identity politics, Hindutva politics, जिसको आप कह देते हो. And they're gaining advantage by breaking opposition parties and kind of divide and rule sort of a politics, bringing rival leaders into BJP, influencing governance and institutions, as I just said. So yeah, that's what he says, he argues, and gives multiple examples of Assam, how under Himanta Biswa Sarma they have shaped the politics around the whole Bangladeshi Muslim immigrant idea versus locals. And then NRC comes into picture, voter categorization comes into picture, land rights, and so on. West Bengal ka example is in consonance with how central agencies like ED and CBI have been empowered and utilized by heavy deployment, and he argues that there has been meddling in the electoral process as well. So yeah, these are the few things which he argues helps BJP gain dominance and run the party more like a multinational company and less like a political party, less like an ideologically driven party. So yeah, that's what it is. That's what the article says. That's what Asim Ali says, not me. Okay, moving ahead. ठीक है आगे चलते हैं. तो स्टेट पॉलिटिक्स सारी हमने देख ली, ठीक है, जितनी भी हमारे लिए रेलेवेंट थी. चैट में क्या चल रहा है? First in my bloodline to read that sentence. That's true. साइप्रस इशू का कोई इम्पोर्टेंस है अभी तो उतना ज़्यादा नहीं है. MAGA verse is going to be a multi-dimensional universe of countries. Orange uncle attacks in name of making America great. Oh my God. Middle East war crying for attention amid India elections. Good evening, Prasadi. Welcome to the stream. Great change to have no articles about Trump on the front page. Yeah, that's true. That's an aberration from the past few days. Okay. Did PM's broadcast violate MCC? So MCC का यहाँ पे मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नहीं है. MCC का मतलब है यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट. MCC वैसे कॉलेज की मुझे याद दिलाता है. मूट कोर्ट कमिटी को हम MCC कहते थे नालसार में. एंड आई वन द इलेक्शंस इन फर्स्ट ईयर,
उसके बाद फिर मैंने इलेक्शंस कभी लाइफ में कंटेस्ट नहीं किए, ना कभी करूँगा, बहुत डर्टी पॉलिटिक्स थी। बट मैं जीत गया था बाय द वे, आई वन द एमसीसी इलेक्शंस, फॉर्म्ड अलायंसेस एंड इट वाज फन स्टफ। आई एंजॉयड participating in elections. Anyway, coming back, थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया मैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो मोदी जी ने इलेक्शन शुरू होने से कुछ समय पहले जो है एक ये स्पीच दी थी, नेशन वाइड स्पीच दी थी। एंड ऑपोजिशन का कहना है कि ये जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज बेसिकली सेट ऑफ रूल्स टू एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करे जाएं, कोई मिसयूज ना करे अपनी पावर का, स्पेशली रूलिंग पार्टी मिसयूज ना करे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड दूं तो ये रूल्स बनाए गए थे 1960 में केरला में, एंड फिर इनको फॉर्मलाइज किया गया आगे चल के 68 में, एंड फिर रिवाइज किया गया इन द 70s, फिर इसमें और रूल्स ऐड करे गए इन लेट 70s फॉर द पार्टीज इन पावर। बट इसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट जो है स्टार्ट हुआ सिंस 1991 बाय द टीएन सेशन गवर्नमेंट। इसकी लीगल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो दिस इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 324 द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन एज वी ऑल नो, एंड एक केस है रिलेटेड मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वैसे उतना नुआंस में आपको जाने की जरूरत है नहीं, बट जस्ट रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ। सो दिस हैज पनिशमेंट्स इफ यू ब्रेक द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वार्निंग्स, सेंसर एंड इवन सस्पेंशन ऑफ पार्टी। But yeah, the context of this, the event which triggered this article is a TV speech which Modi ji gave on the state-run platforms like Doordarshan, Sunset TV, All India Radio, where he named opposition parties and urged women voters in Tamil Nadu and West Bengal to vote against the erstwhile ruling parties. एंड ऑपोजिशन का कहना है कि दिस वायलेट्स एमसीसी के रूल्स, स्पेशली पार्ट 7 ऑफ द रूल्स, सेइंग दैट द रूलिंग पार्टी कैन नॉट यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर कैंपेनिंग। तो दूरदर्शन ऑफ कोर्स, ऑल इंडिया रेडियो ऑफ कोर्स इज अ गवर्नमेंट रिसोर्स, है ना, दिस इज नॉट अ पार्टी रिसोर्स। एंड ऑफ कोर्स दे आर यूजिंग पब्लिक मीडिया फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज, स्टेट फंडेड मीडिया फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज, व्हिच इज अ मिसयूज ऑफ द एमसीसी। अब इस पे लॉ क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 123 टॉक्स अबाउट आइडेंटिटी बेस्ड अपील्स, यानी कि दिस बैन्स आस्किंग फॉर वोट्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एक्सेट्रा, एंड और भी उसमें नुआंसेस हैं बट ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। बट मोदी जी ने जो है किसी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज टाइप की आइडेंटिटी पे फोकस नहीं किया, उन्होंने जेंडर पे, विमेन वोटर्स पे फोकस किया। सो इट्स इन ग्रे एरिया कि ये क्या वायलेट करेगा इस सेक्शन को या नहीं करेगा, वी डोंट नो, कोर्ट वुड डिसाइड दैट ऑफ कोर्स। एंड अनदर सेक्शन विच कम्स इनटू प्ले इज 123 क्लॉज 7 विच इज मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, जो मैं अभी आपको बता ही रहा था, यूजिंग ऑफिशियल रिसोर्सेज फॉर कैंपेनिंग। तो वो तो जो है लग रहा है कि वायलेट हो रहा है। अब देखते हैं कोर्ट इसको कैसे इंटरप्रेट करता है एंड व्हाट इज द आउटकम विच कम्स आउट ऑफ दिस। बट या, दिस इज प्रीटी मच व्हाट हैपेंड। ठीक है, चैट क्या कह रहा है, लेट मी चेक। So much of current affairs this year, hard to predict what can come. That's true, यार. Every day new bomb. Times of India न्यूज़पेपर have this article. अरे बाप रे, क्या मर्डर किया आपने इंडिया की स्पेलिंग का और आर्टिकल की स्पेलिंग का, अनुष्का जी। So I can't understand. So I think I can ask the trumped up, okay, trumped up manliness of MAGA वर्स को भी आपने वार्स कर दिया, ओके, एंड मोर आर्टिकल लाइक, अरे बाप रे, को थोड़ा सा क्या कहते हैं वो हो गया है आपका कमेंट पढ़ के, भौचक्का हो गया हूँ मैं थोड़ा सा। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट, बट एज आई सेड कि टाइम्स ऑफ इंडिया से बेटर है आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करो। बट ज़बरदस्ती अगर कुछ आपकी ऐसी दिल लगी है टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, कोई पर्सनल नाता है, तो ठीक है, कर लो टाइम्स ऑफ इंडिया, भी कोई खराब ही नहीं है। So yeah. Mom would get bored when she asked me what news was about, and I kept saying Trump and Hormuz. That's true. अभी तो पिक्चर बाकी है, इंडिया अफ्रीका मीटिंग, फीफा, ब्रिक्स भी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है अभी। विजमी सिंह, जनरल इलेक्शंस में खड़े हो जाओ, हम वोट दे देंगे। हाँ, मेरी एलिजिबिलिटी तो हो गई है, 26 का हो गया हूँ मैं। पार्टी बनाओगे, हम लोग वोट दे देंगे, क्या बात है। 38 वोट्स हैं मेरे पास, शाबाश। हाईली सपोर्ट सर एज अ लीडर, नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट। अभी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी जब आगे अपना सक्सेसर ढूंढेंगे तो फिर मैं जो है आई विल डेफिनेटली पुट माय हैंड फॉरवर्ड, बट गुड टू नो दैट आई हैव सपोर्ट
from 38 youngsters. Not that I'm not a youngster, but yeah, lovely. Thank you for your आपके आपके सपोर्ट का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ दोस्तों. इसका ऋण मैं कैसे चुका पाऊंगा, मेरी समझ के परे है ये बात. बट ठीक है, करूंगा मैं, आप लोगों के विकास के लिए काम करूंगा. क्या चाहिए आप लोगों को, डिमांड्स क्या हैं आप लोगों की? हाँ, हर हर साल हर महीने एक वेकेशन स्पॉन्सर करी जाए यूथ के लिए टू द प्लेस ऑफ देयर चॉइस. उसके अलावा अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल OTT प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया, नो पेमेंट, अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस, 5G 6G वट एवर, टू ऑल ऑफ यू. उसके अलावा और क्या दे सकते हैं आप लोगों को एज अ फ्री बी? सोचूंगा मैं अपनी उसके मैनिफेस्टो के बारे में. थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी. चलो आगे चलते हैं. व्हाट डज द लेटेस्ट रूलिंग मीन फॉर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट? नॉट दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट चलो समथिंग डिफरेंट तो हम कर लेते हैं. व्हाई डिड द कोर्ट इंटरवीन इन द DLCs? DLC का यहाँ पे मतलब है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी का डिसीजन. व्हाट डज द लॉ से अबाउट एविक्शन एंड ग्रेजिंग राइट? ग्रेजिंग इज जो गाय भैंस घास खाती है उसको ग्रेजिंग कहते हैं, वो तो पता ही है सबको. तो यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक डिसीजन की बात हो रही है वेयर दे आर डिस्कसिंग दिस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड वेदर इट ओवरराइड्स द ओल्डर ऑर्डर्स और नॉट. तो फॉरेस्ट राइट के क्लेम से रिलेटेड ये है विद रिस्पेक्ट टू डिफॉरेस्टेशन. एंड बेसिकली दे आर डिबेटिंग कि ये जो पुराने लॉज हैं जो नए लॉज में उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है. एंड DLC के पास, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास गया ये इशू, एंड उन्होंने जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको इग्नोर कर दिया, वायलेट कर दिया, जो भी कर दिया. फिर उन्होंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए हैं, डिफरेंट कोर्ट प्रेसिडेंट्स. एंड द इशू इज़ कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो अलाउ करता है ग्रेजिंग राइट्स इन फॉरेस्ट इवन इन प्रोटेक्टेड एरियाज, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस पे बैन लगा रखा है. अब क्या FRA प्रिवेल करना चाहिए या मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन प्रिवेल करना चाहिए? शुड अ सेंट्रल लॉ ओवरराइड स्टेट लॉ और नॉट, और वेदर दिस वाज फॉलोड और नॉट, दैट इज वेयर द डिबेट इज. एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट ने जो है रीअफर्म किया है कि FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट जो कि एक सेंट्रल एक्ट है वो सुप्रीम रहेगा ओवर द ओल्डर लॉज एज वेल एज प्रीवियस कोर्ट ऑर्डर्स, क्योंकि वो सपोर्ट करता है ट्राइबल्स को और फॉरेस्ट राइट ड्वेलर्स के राइट्स को. सो या दैट इज द टेक अवे कि FRA इज सुप्रीम, फॉरेस्ट राइट एक्ट्स इज सुप्रीम ओवर प्रीवियस कोर्ट जजमेंट्स. ठीक है, आसान भाषा में बस इतना ही है इस आर्टिकल में. ओके, व्हाट्स चैट सेइंग? भाई और बहनों, नो एग्जाम्स एज डिमांड. चलो डन, एग्जाम सारे बैन है आज से. हर इज सेइंग मॉम्स वाटर वेंट थ्रू हर नोज बिकॉज ऑफ. अरे मम्मी जी भी कमेंट्री सुन रही. नमस्ते मम्मी जी, डैडी जी एंड ऑल द अदर रिलेटिव्स. सादर प्रणाम सबको जो जो इस स्ट्रीम को सुन रहे हैं. मुझे उम्मीद नहीं थी मेरा डेमोग्राफिक इतना डाइवर्स है. ओके चलो आगे चलते हैं हम लोग. आई विल कम बैक टू द चैट लेटर. लेट्स जस्ट फिनिश ऑफ द न्यूज़पेपर. ज़्यादा कुछ है नहीं आज न्यूज़पेपर में ऑनेस्टली. स्टेट असेंबली इलेक्शंस के ही रिजल्ट्स हैं. ओके, ये दोनों आर्टिकल्स हम PPT पे करेंगे. वन इज रिगार्डिंग सर्वाइवर्स ऑफ एसिड अटैक्स, वन इज रिगार्डिंग मिसयूज ऑफ बेनिफिट्स फॉर द ट्रांस पीपल. दीज टू आर्टिकल्स आई हैव पिक्ड अप फॉर द PPT. यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है. आज दिल्ली में मैच है, ट्रैफिक एडवाइजरी आई हुई है. ओके, किसके साथ मैच है दिल्ली का? चेन्नई CSK के साथ. आज धोनी भाई के दर्शन होंगे आज की? नहीं होंगे दोस्तों, अभी तक तो नहीं हुए हैं. ओके, दिस इज अगेन इलेक्शंस. Okay, this is something new. Srinagar resumes its role as J&K's summer capital after a hiatus. Hiatus मतलब होता है pause, break of 6 years. तो 6 साल से जो ये shifting होती है between the capitals of J&K वो नहीं हो रही थी. Winter capital is Jammu, summer capital is Srinagar. S से श्रीनगर, S से समर, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग. तो ये जो प्रैक्टिस है ये आई थी लगभग 150 साल पहले जब डोगरा रूलर गुलाब सिंह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गुलाब सिंह ही थे ना, जब गुलाब सिंह का राज था इन जम्मू एंड कश्मीर. यस, महाराजा गुलाब सिंह इन 1872, करेक्टो. तो तब से ये जो है प्रथा चलती आ रही है ऑफ 2 डिफरेंट कैपिटल्स. एंड
6 साल से ये नहीं हो रहा था, बट नाउ दिस हैज रीस्टार्टेड. उमर अब्दुल्ला, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इन दिस सेरेमोनियल इवेंट एट द सिविल सेक्रेटेरिएट at the summer capital in Srinagar. So yeah, this Darbar move was stopped by Manoj Sinha, who was the lieutenant governor in 2020. इसको ये shifting of capital, इसको दरबार move कहते हैं. And Omar Abdullah last year revived this tradition, and अब जो है first time फिर से 6 साल बाद श्रीनगर is the summer capital. तो बस यही है इसमें, और तो ज़्यादा कुछ नहीं है. ये वाला आर्टिकल भी हम पीपीटी पे देखेंगे, चाइल्ड राइट्स पैनल एंड पॉक्सो रिलेटेड प्रोविजंस. ये देखो बिहार में क्या बढ़िया चीज हुई, मतलब बढ़िया तो नहीं हुई बट अम्यूजिंग. स्लैब ऑफ विक्रमशिला सेतु ब्रिज कोलैप्स्ड इन द गंगा रिवर. बीच में से पुल टूट के नदी में गिर गया. लकीली नो वन गॉट इंजर्ड और नो वन लॉस्ट देयर लाइफ, बट वाओ, जस्ट वाओ. कभी ट्रेन की पटरी गायब हो जाती है, कभी ट्रेन का ब्रिज चोरी हो जाता है, कभी ब्रिज बीच में से गिर जाता है. जस्ट आई डोंट वांट टू स्टीरियोटाइप या, बट क्या बोलूं मैं यार, मतलब दिस इज हिलेरियस भी है, ट्रेजिक भी है, और इट्स जस्ट इनसेन. इसको देख के मुझे एक मूवी सीन का याद आ रही है. धमाल मूवी देखी आप लोगों ने? थोड़ी पुरानी है बट कुछ लोगों ने शायद देखी हो. कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवी. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, कभी देखना. तो उसमें वो ऐसे बीच में ब्रिज टूट जाता है, वो गाड़ी ऐसे कुदाता है, तो कैलकुलेट करता है कि अब ब्रिज है 100 मीटर का डिस्टेंस, हमारी स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर, तो गाड़ी अल्टीमेटली कुदाते हैं, पेड़ में घुस जाती है, ठुक जाती है. एनीवे, इट्स अ फनी सीन. इट्स नॉट फनी वाइल नरेटिंग, बट वाइल वॉचिंग इट्स प्रीटी फनी. ठीक है, आगे चलते हैं. सीयूईटी एस्पिरेंट्स शिकायत कर रहे हैं कि दूर दराज सेंटर मिल गए हैं हमें. दिस इज अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर. Although my sympathies lies with these students, but ठीक है यार, बड़े हो जाओ. अब 17-18 साल के हो गए, थोड़ा बहुत ट्रैवल कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए. इट्स फाइन. इतना कोई नाइटमेयर तो नहीं बोलूंगा मैं इसको. लॉजिस्टिकल इशू श्योर. नाइटमेयर इज slightly over exaggerating it. I have been an aspirant. I was also 18 when I went to give my AILET exam, almost 300 kilometers away from home. So it's okay, कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है. Interesting story. When I went to give that exam, लखनऊ सेंटर था मेरा, तो NLU लखनऊ में ही पड़ा था मेरा सेंटर. एंड मैं लखनऊ घूमा एक आध दिन रुक के, एंड आई मेट अ सोलो फीमेल ट्रैवलर ऑलमोस्ट माई एज. शी वॉज traveling alone from Italy. So we got along, made friends. And she was on a solo trip to India. She was also 19-20 years of age. I was also 18-19 years of age. And I was wondering कि भाई ये लोग जो है सोलो ट्रिप कर रहे हैं दूसरे देश में, एंड इंडिया जैसे देश में, विच इज़ कंसिडर्ड अनसेफ फॉर ट्रैवलर्स इन जनरल एंड विमेन इन स्पेसिफिक. तो यार हम लोग एग्जाम देने तो जा ही सकते हैं दूसरे शहर, इतना बिग डील भी नहीं है. ठीक है, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़. Police launches ORS drive for personnel to tackle Rajasthan heat. Okay, nice. ठीक है, इतना ही है दोस्तों आज के अपने न्यूज़पेपर में, और कुछ खास अपने पास है नहीं which is relevant for competitive exams. UAE says Iran has resumed attacks as US moves to reopen Hormuz. लो आ गया फिर से Hormuz. Ukraine targets Moscow skyscraper in a rare attack. Okay. यूएई कह रहे हैं ओपेक एग्जिट हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है, दूर की सोच रहे हैं हम. कार्नी लुक्स टू यूरोप टू बिल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. मार्क कार्नी इज द कैनेडियन पीएम. कल रोहित भाई ने बढ़िया 83 रन मारे. रिकल्टन ने भी बढ़िया खेला कल. मुंबई जीत गई अपना मैच. बाकी ये मैंने आपको कल ही बता दिया था. किमी एंटोनेली हैज वन द मायामी ग्रां प्री. द 19-year-old is the youngest to lead the championship. So yeah, that's all we have in today's newspaper, folks. Let's come back to our PPT and do the remaining things. Before that, let me just quickly check the chat. बहुत सारी बातचीत हो गई है chat. सबको एनालिस्ट में डलवा दो, फिर एनालिस्ट की वैल्यू क्या रह जाएगी यार. सब लोग एनालिस्ट पहुंच जाएंगे तो ये तो थोड़ा वो हो जाएगा, काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा काम. रिमूव जीके सेक्शन फ्रॉम क्लैट. क्या चाहते हो? नौकरी से निकलवाना चाहते हो मुझे? मेरी रोजी रोटी पे लात मारना चाहते हो आप?
Okay, so I'm saying I'll tell my brother to vote for you, NLS Dilwar. Say yes, we have Minty today. Okay, Shami saying मेरी भी family देखती, they love your streams. Grandma gave 50 recipes to cure. अरे वाह, that's so sweet, yeah. So very sweet, Shami. Say my thank you to grandma. थाला का तो नाम ही काफी है क्राउड को हाइप करने के लिए. That's true. Bihar is like Ohio of India. Yeah. Surprising how it broke didn't get stolen this time. बिहार और ब्रिज का रिश्ता है. वेकेशन दोस्त को अंडमान निकोबार में सेंटर मिला है. Oh, that's actually a logistical nightmare. I stand corrected. Why you remember all nuances of the trip? That's a good question. You know why. चलो ठीक है, दिल तो बच्चा है जी. आगे चलते हैं. Let's move ahead. Supreme Court brings survivors of forcible ingestion of acid in the RPWD Act. This is the People with Disability Act. R से क्या था? Rights of People with Disability Act. So जिन लोगों को forcibly administer कराया गया है acid against their will, with consent तो कौन ही लेगा acid? But yeah, these would also be in the definition of acid attack victims now, which is a good thing, I think. 2016 law recognized only victims of acid throwing and not forcible acid ingestion. Ingestion मतलब consume करना. It accepted both the act of acid throwing and administration as offences, punishable with imprisonment from 10 years to life sentence under section 124. Chief Justice Hamare, along with Justice Bakchi, said the reading into of survivors of forcible administration of acid in the category of acid attack would be deemed as operative retrospectively from the inception of the act. यानी कि 2016 से ही ये applicable माना जाएगा. In hindsight भी ये active रहेगा. ठीक है. तो एक होता है prospective application, एक होता है retrospective. तो retrospective तब से ही. The deemed recognition would aid victims of forcible acid ingestion to claim disability benefits under the 2016 Act. इसीलिए retrospective इसको किया गया. Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the government, said the nodal ministry has already forwarded the proposed amendment in the schedule of the Act to the Ministry of Legislative Affairs, though he urged the court to wait for the ministry to initiate the amendment. Senior advocate Mukul Rohatgi, appearing for petitioners, successfully pleaded to the court to flex its plenary powers under 142. Which provides discretionary powers to the Supreme Court, as it states that the Supreme Court, in exercise of its jurisdiction, may pass any decree or make order which is necessary for doing complete justice for any matter pending before it. RPWD के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ. This was passed by the Parliament to give effect to the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities, which India ratified in 2007. The Act replaces the earlier Persons with Disabilities Act of 1995, which was inadequate and outdated for the needs and challenges of these people. And the major changes were the expansion of the definition and classification of disabilities, empowers the central government to notify other categories of disabilities, and defines a person with disability as a person with long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment, which, in interaction with barriers, hinders his full and effective participation in society equally with others. Then we talk about the misuse of benefits for trans people. Supreme Court का कहना है कि there is a danger of those masquerading, मतलब pretending as transgender people to get welfare benefits while hearing multiple petitions challenging a law that removes the right to self-identification. The Transgender Persons Protection of Rights Amendment Act requires a government-approved, appointed medical board's favorable recommendation for a DM to certify an individual as transgender. The petitioner said the act disregards their identity as authentic human identity freely chosen and violates their rights. इस पे हम ऑलरेडी डिस्कशन काफी कर चुके हैं. तो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा, डज इट नॉट पोज अ डेंजर दैट देयर आर पीपल हु वुड मास्करेड दिस क्वालिफिकेशन फॉर ग्रैबिंग रिजर्वेशन ऑफ प्रिविलेजेस? ट्रांसजेंडर एक्ट की बात करें तो दिस वाज आफ्टर द नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट इन 2014, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस. दिस प्रोवाइडेड लीगल रिकॉग्निशन एंड राइट टू ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया. Definition is a person as one those whose gender does not match the gender assigned at birth, inclusively covering trans men, trans women, intersex persons, and socio-cultural identities like Kinnars and Hijras, regardless of medical intervention. So 2011 के census में there were close to 5 lakh of this population in with UP, Andhra Pradesh, and Maharashtra being the top 3 states.
देन इसी जजमेंट से राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन दिया गया था. देयर वाज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म थ्रू द नेशनल काउंसिल ऑफ transgender persons to advise the government on policies for them. Then, by removing Section 4, Clause 2 of the 2019 Act, which is the self identification principle, the bill, the recent one, directly contradicts the principles of NALSA. We have discussed this. There's clinical gatekeeping requiring a board headed by a chief medical officer to recommend the person to the DM. So, yeah, revised definition has those people with socio-cultural identities and biological variations. The NALSA judgment recognized them as the third gender and affirmed the right to self-identification. The SMILE initiative, the SMILE scheme is for rehabilitation and empowerment of transgenders with Garima Grace for their shelter. The last one is regarding child rights panel for faster trial. This is with respect to this Pune case. And the Maharashtra Commission for Protection of Child Rights asked the state government to appoint a special public prosecutor in the rape and murder case of this girl in Pune and transfer the case to a fast track court. First May को Maharashtra Day था, and this is where that incident happened. Unfortunate. And this case triggered widespread protest, including night-long blockade of the Pune-Bangalore highway, police bet on charge, and band in various places. And the case was registered under POCSO. POCSO की बात करें तो this is the first comprehensive law in India dealing with sexual abuse of children and to protect them from assault, harassment, pornography. And this also defines the various crimes under it, which you can see I've written here. The case are more vigorous when the offender is a public servant or a police officer, or when they are a relative of the child. So yeah, these are some provisions of POCSO. It criminalizes all sexual activities for those under age of 18, even if they are consensual. All of these things we already discussed, more or less. POCSO case must be disposed of within a year from the date of offense. Empowers NCPCR and the SCPCR to monitor the implementation of the provisions. And if the child is the offender, then it's dealt under the JJ Act, the Juvenile Justice Act. This has enhanced punishments under various sections, जो हमने discuss कर लिया. 2 more grounds for definition of aggravated penetrative sexual assault. ठीक है. Okay, so that is all about POCSO. Now, coming to the vocab of the day, the first word is facile, which means superficial, shallow. Having or showing a lack of depth or understanding or character, that is facile. The movie takes a facile look at what happens when teens enter into serious romantic relationships. The next word is quibble. Quibble मतलब होता है, छोटी छोटी कमियां निकालना, complain, criticism, to make peevish criticisms or objections about minor things. That is quibbling. Let's not quibble over minor details. The last word is brouhaha. So this sounds like an evil laughter, but this means a noisy or overexcited reaction to something, disturbance, ruckus, bustling. A brouhaha erupted over her statements about the president. Interesting word. The antonyms are peace, quiet, tranquility. The shor sharaba, sudden shor sharaba kisi as a response to something, that is called a brouhaha. So brouhaha is this. Then there is quibble, which is complaining of minor things, and facile is superficial or shallow. With that, we come to the end of our discussion with respect to the analysis and to the start of our Menti quiz. So people who are new to this discussion, Menti quiz is a quiz which we do on a platform called Menti, and you can access it on the website www.menti.com. इस वेबसाइट पे आपको जाना है और एक कोड डालना है, न्यूमेरिकल कोड, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी तुरंत. The code for today's quiz is 14598673. I'll put it here, 14598673. So you need to go to this website, www.menti.com. I have put it in the chat box. And put in this code, 14598673, and you'll be able to join my quiz. I'll also present it on the screen. So stay on the stream. Don't leave this YouTube stream. Open this on a different device, maybe, or on a different tab or window, so that you can participate simultaneously. ठीक है, तो आ जाओ फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं. 15 क्वेश्चंस का क्विज है. आई वुड से मॉडरेटली डिफिकल्ट क्विज है आज का. तो अगर आप लोग अच्छे से पढ़ के आए हो तो आप इजीली नेविगेट कर पाओगे. अगर नहीं पढ़ के आए हो तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा आज का क्विज. डिमोटिवेट मत होना, पूरे 15 क्वेश्चंस खेलना, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू लर्न समथिंग इफ यू डोंट नो द आंसर. ठीक है, चलो स्टार्ट करें आज की बातचीत. सोरा सेज brouhaha was in छोटा भीम के माड़ा एपिसोड. ओके,
How do you suggest going into law while studying such traumatizing cases? It is even more important that you are aware of the law so that you can protect the rights of people in such cases. Reading newspaper every day and making notes from Manthan is enough. Yeah, that covers 90% of the ground for you. Just supplement it through some daily quiz or daily news kind of a resource. Could be anyone. Affairs Cloud है, GK Today है, दृष्टि है, बहुत सारे हैं. Pick anyone, whichever suits you, and वो भी थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लिया करो. That would ensure that nothing is left from a one-liner perspective. ओके, आ गए सब लोग उस पे अपने क्विज पे. हाउ टू लॉग इन द क्विज? सिंपल है. यू जस्ट हैव टू गो टू दिस वेबसाइट www.menti.com. देखो आपके चैट बॉक्स में आ रही होगी, स्क्रीन पे भी मैंने शेयर कर दी. एंड देन यू हैव टू पुट इन दिस कोड 14598673. I'll also share it with you guys. Just a moment. So this is the process. Go to menti.com, enter the code. As simple as that. I'll give you guys 1 minute to join. जल्दी से आ जाओ. हाँ, सीएल की वेबसाइट पे भी डेली न्यूज आती है. दैट इज ऑल्सो गुड. दैट ऑल्सो वर्क्स. मेंटी अभी सीएल का प्रमोशन करने लगा है. सही, बढ़िया है. राइट, ठीक, जल्दी जल्दी आ जाओ दोस्तों. स्टार्ट करें. Let's see how many people are here. 23, 24, 25. Can we get to 30 people? I can see 40 plus on the stream. 30 तो हो जाने चाहिए. Now is the time to choose creative user names. आप लोग जो चाहो वो यूजर नेम अपना क्विज नेम रख सकते हो through which you participate. काफी creative, very unique user names we see in almost every quiz. So now's the time to unleash your creative juices. देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग नाम कौन रखता है आज. I'll wait for 30 more seconds, then we'll start. Yeah, Prasati, I feel the same. Although I'm not in charge of that. But yeah, that's why I gave you those other names as alternatives. Are we ready, dosto? Shall we begin? Should I take a countdown or should I wait more? आ गए सब लोग? चलो, let's take a countdown till 10 and then let's start. Last opportunity to change your names if you want to. Countdown begins. 10, 9, 8, Thala, 6, 5, 4, 3. सनी देओल के हाथ का वजन 2.5. 2, 1, and let's go. Let's go to the first question of today's quiz. Yes, this is the legendary William Shakespeare. उनकी डेथ एनिवर्सरी को हम एज वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेट करते हैं April 23rd every year. That's correct. Billy comes back. Okay. Welcome back, Billy. Then we have Pratyush, Vijay Malia, Bruhaha. Nice. SRH fan, Chota Bheem, Tiger, Srishti, Kirmada, Core, Siddhi. All right, nice names. Let's go to the second question, folks. 27 people with us. Question number 2. Here we go.
Yes, this is Gilbert Humbo, who has been reappointed as the DG of the International Labour Organization. Correct. ओके, दो बिल्ली आ गई हैं लीडर बोर्ड पे. बिल्ली मौसी. ओके. बिल्ली कम्स बैक, प्रत्युष, विजय, एसआरएच, छोटा भीम, सृष्टि, म्याओ म्याओ. ओके. काफी सारे कैट लवर्स हैं आज की क्विज में. चार्वी इज हियर, बिल्ली मौसी इज हियर, जूल्स इज हियर. ऑलराइट, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. 28 प्लेयर्स नाउ. क्या बात है. Question 3, here it comes. Theme of the World Earth Day. Yes, अरे वाह, क्या बात है, सबको पता था ये. Our power, our planet. That is the theme this year. 1, 2, 3, 4. Didi Beng, Didi Bengal se baar. Wow, wow, that wins the cake for this particular Minty quiz. और तो उतना बढ़िया राइम नहीं हुआ. अच्छा, 1, 2, 3, 4 कहना चाह रहा. ओह माय बैड. 1, 2, 3, 4 पढ़ा मैंने उसको. 1, 2, 3, 4, दीदी बंगाल से बाहर. क्या बात है. नाइस. नाइस नाइस. Question number 4. Let's go. A slightly tough question. I got it, Sambhav. Oops, only 5 people got this right. This was Christina Koch, who became the historical person to make this first ever ship to ship call, human mission say ISS की ओर. Reed Weissman, I think, is the person who picked up the call from the ISS, if I'm not wrong. Pata nahi, not sure, but Christina was the one who made the call. Julab Gaya Mun. I don't like people who meddle with the favorite dessert of mine. But ठीक है. Have guts. The disrespect to Gulab Jamun. This is intolerable. Intolerable. Okay. आगे चलते हैं. Let's move ahead. You have successfully rage baited me. This was Anshas, Egyptian city, जहाँ पे Cyclone 4, this joint special exercise between India and Egypt, was conducted. Anshas. Correct. Siddhi had the fastest response. Pratyush now on first spot. Then we have Billy comes back, Jules, Vijay, Aradhya, 1, 2, 3, 4, Kirmara, Chota Bheem, Siddhi, and Julab. Okay. Next question. Question number 6. On your screens, folks, now. This is very recent news. No, this is ISA, CDRI, and GBA. These are the 3 India-led initiatives which Jordan joined together. BIMSTEC is not India-led. Quad B is not India-led. नहीं बोलेंगे हम उसको. So yeah, this is the first option. Billy Mousy had the fastest response, pretty much the same leaderboard. So we move ahead to question number 7 out of 14. This is a question we have discussed in class. Yes, आरबीआई ने कहा कि अभी हम और देखेंगे वॉर सिचुएशन कैसे डेवलप होती है. सो इट वाज हेल्ड अनचेंज्ड एट 5.25% द रेपो रेट. पूरा समझाया था मैंने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्लास में.
Kirmada had the fastest response. Jules now on the top spot. Pratish on second. Vijay, Billy. Both the Billies are together now. Then we have 1, 2, 3, 4. Kirmada, Radhya, Chota Bhim, and Siddhi. Okay, let's go to question number 8. Another question which I have discussed time and again in class should be easy for the regulars. Yes, this was 2023. That's when the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, the 1/3 reservation for women, was passed. Correct. Magga. That's an interesting name. Vijay Malia had the fastest response. All right, let's move ahead to question number 9. Let's go. We're talking about the April report, the latest one. The April report says that we are the 5th largest military spender. Third, fourth जो हैं पुरानी reports के numbers हैं. So the latest numbers हैं that says we are the 5th largest spender. We were the 5th largest rather in 2025. So that is the right answer for sure. Adhya got this. 1, 2, 3, 4. Billy and Pratyush got this. Pratyush again back on the first spot. Aradhya had the fastest response. Then we go to question number 10 now. 10th question, here it comes. Let's go. Got disconnected. Oh, I'm so sorry for you. Misclick हो गया. ध्यान से करो. So sleep जो है काफ़ी पुराना जो है ये जजमेंट है. We are of course talking about April 2026 and this was regarding the right to safe road travel. That is the right answer. Feed stray animals तो नहीं है and the right to life. So yeah. They're saying got slowed down. Menstrual health भी था उसमें. That was I was thinking कि वो ऑप्शन रखूं बट फिर वही है ना कि dubious हो जाता आंसर सब्जेक्टिव हो जाता तो इसलिए I did not keep that as an option जानबूझ के. Okay, Billy Mossy had the fastest response. Pratyush maintaining his lead. Let's go ahead to question number 11. First privately built orbital rocket. What's the name? This is not Vijay, Victory, or Veer. Those are made up names by me. The right answer is Vikram 1. That is India's first privately built orbital rocket. रेवंत रेड्डी जो सीएम हैं हमारे तेलंगाना के उन्होंने ये फ्लैग ऑफ किया फ्रॉम श्री हरिकोटा. Alrighty. Srishti G has made an entry to the leaderboard. The fastest response. Pratish still on the top spot. Rest of the leaderboard pretty much the same. Question number 12 comes on your screen now. ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया था. Okay, one person chose option number D. that option I just have put for the cult fans of Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. For the 2-3 people who might get that joke, this is just for me. कुछ चीजें बस मैं creatively अपने लिए करता हूँ. ये option मेरे लिए था. I just found that funny. जिन लोगों को पता है reference उन लोगों को पता है. मैं समझाने नहीं वाला हूँ ये. But yeah, the right answer is Sebastian Save. And पहले पर्सन बन गए जिन्होंने 2 घंटे से कम में 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ी. दिस वाज द लंदन मैराथन. अगर आपसे पूछ लें कौन सी थी तो लंदन मैराथन थी ये. एंड इन्होंने जो है पिछला रिकॉर्ड वाज सेट बाय केल्विन किप्टुम
दोनों केनिया के हैं, केल्विन किप्टुम भी केनिया के थे जिन्होंने पहले रिकॉर्ड बनाया था, जिन्होंने ये तोड़ा है सेबेस्टियन सावे, ये भी केनिया के हैं, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आई बिलीव ही प्रेफर्स ही हिज नेम सेबेस्टियन सावे। मैंने क्या लिखा है, सेबेस्टियन लिखा मैंने, दैट इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम द रिसोर्स आई वाज रेफरिंग टू, but okay, if he prefers that, then good for him, and sorry to him for not following his preference. Visham, he got it. Thank you for getting that joke. Jethalal Kaur, yes, Mohenjo-daro the. This is a wordplay on Mohenjo-daro, old Tarak Mehta episode. Anyway, let's look at the quiz leaderboard. Magga had the fastest response. Pratyush, Jules, Aradhya now on third spot. Then we have 1, 2, 3, 4 on fourth. Magga on fifth. Billy Mossy, Srishti G, Vijay Malia, Kirmada, and Billy comes back. Second last question of today's quiz. Let's go. This is 21st April. पहली बार हमने जो है इंडस्ट्रियल डे ऑफ विमेन इन इंडस्ट्री सेलिब्रेट किया है, एंड दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस क्वेश्चन। 21st अप्रैल को सेलिब्रेट किया था, ठीक है। Okay, Brouhaha is back on the leaderboard. Pratyush on first, Aradhya on second, Jules on third, then Srishti at the fastest response, and 1, 2, 3, 4, Magga, Billy, Vijay, Kirmada, and Brouhaha. And with that, we go to the last question of the day. Question number 14. लगातार 2 मिस क्लिक कर दिए शौर्य, बाप रे। This is Bharat Taxi. This is the app, India's first cooperative ride hailing platform for autos, cabs, and Mumbai में लॉन्च हुआ ये। बाकी 3 नाम जो हैं वो मैंने बनाए, घूमो, इंडो टैक्सी, and Taxify. Those are fake names. Bharat Taxi is the right name. And yeah, most of you got this one right. Easy question. Billy Mossy and Vijay Malia got this wrong. Okay. Aradhya had the fastest response. Pratyush has won this quiz. Clinical performance, very well played, Pratyush. Nicely done. I think this is the first quiz you have won, the first mentee, if I'm not wrong. So yeah, congratulations. Tons of congrats to you. Then other players who played super well: Aradhya, Jules, Srishti, 1, 2, 3, 4, Magga, Brouhaha, Kirmada, Billy, Mossy, Vijay. Whoever you guys are, I'm super proud of you. Very well played. And everyone who participated, thank you so much. Maybe next time you'll be on the leaderboard. Study a little harder. Come well prepared. Next quiz भी हम अप्रैल के current affairs पे करेंगे, because there are a lot of questions which are to be asked from April, जो अभी हम नहीं कर पाए इस क्विज में कवर। नेक्स्ट क्विज भी फ्राइडे को होगा, 15 क्वेश्चंस अप्रैल करंट अफेयर्स, ठीक है, तो रिवाइज करके आना। अभी से बता दिया मैंने आप लोगों को। चैट क्या कह रही है? सोर्सेज आई टोल्ड, आई सेड जीके टुडे देख सकते हो, दृष्टि देख सकते हो, दृष्टि IAS इज अ वेबसाइट, देन अफेयर्स क्लाउड इज अनदर वेबसाइट, बट अगेन आपको थोड़ा सा फिल्टर आउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको सिखाया है ना, सारा कुछ रेलिवेंट नहीं होगा। Last 6 questions got me from 20 to 4. क्या बात है, that's a big jump. Misclick the marathon 1. मुझे हर बार क्रिएटिव नाम का अवार्ड मिलता है, अरे वाह क्या बात, that's an achievement in itself. Messed up last 2 questions, last 6 questions रैंक बड़ी है, स्वरा की भी। चलो ठीक है, thank you so much for participating guys, always a fun experience hosting you all for this quiz and having you in the stream. कल मिलते हैं with another Hindu analysis session, and Friday को next Minty quiz, April current affairs again. ठीक है, आज के लिए इतना ही। Thank you so much. Tada, bye bye, take care, signing off.